हेलो स्टूडेंट, ग्रुप थियरी लेक्चर नंबर 8। प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी। ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर कोई आपके पास जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार कोई ऑपरेशन है इफ जी विथ ऑपरेशंस दिस स्टार, दिस इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, सेटिस्फाई फोर प्रॉपर्टी। कौन सी फोर प्रॉपर्टी? फर्स्ट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट associativity, associativity। उसके बाद existence of identity, existence of identity, and last property, existence of inverse। अगर G with star algebraic structure if satisfy this four property means closure property, associativity, existence of identity and existence of inverse, तब हम G with star को क्या बोलेंगे? ग्रुप। एंड एडिशनल वन प्रॉपर्टी satisfy commutativity, commutative। If this five property satisfy, then we say that G with star is called abelian group। कौन सा ग्रुप? abelian ग्रुप। अगर ये फोर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है तब हम ग्रुप बोलेंगे। अगर ये एडिशनल प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव सेटिस्फाई भी कर रही है तो हम उसको अबेलियन ग्रुप बोलेंगे। दिस क्लियर? नाउ कंसिडर एग्जाम्पल। नाउ कंसिडर सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 up to so on, and consider operation star. First consider addition, then consider subtraction, then consider multiplication, then division. Now check one by one: natural number with addition, natural number with subtraction, natural number with multiplication, and natural number with division. Is a group or not? First, check natural number with addition is group or not. Means first check closure property. क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करी? अगर कोई भी आप दो नेचुरल नंबर ले लो सेट में से, यहां पे ऑपरेशन स्टार कौन सा है? एडिशन। मीन्स आप दोनों नंबर का एडिशन करो, वो भी नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। मीन्स आप कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, उसका एडिशन करो, नेचुरल नंबर ही मिलेगा हमेशा। मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई एंड विथ एडिशन। नाउ सेकेंड रिक्वायर एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव क्या करी? अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आपको काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इन जनरल लिखो। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव मीन्स आप कोई भी तीन एलिमेंट ले लो, ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फर्स्ट फाइंड एडिशन ऑफ ए एंड बी, then add C, and first find addition of B and C and add A. Both result are the same or not? Means if you consider any three natural number, this property always hold. Means this is associative satisfy. Now identity, identity क्या कह रही है कि आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, उसके साथ there exists identity element E so that A plus E is equal to this A। तो ये यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होना चाहिए? जीरो। A plus जीरो इज ऑलवेज A or not? और जीरो प्लस A is always A, but identity require inside means this element require inside, but here E is equal to identity exists, but this in set of natural number? Answer is no। Means identity exists but not in the set. Identity exists, A plus 0 is equal to A, this is always true, but not in the set. Means identity does not exist here, identity does not exist,
डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स आपको ऐसा एक एलिमेंट फाइंड करना था जिसके एडिशन कोई भी नेचुरल नंबर के साथ एडिशन करने से वो सेम नेचुरल नंबर मिले मीन्स जीरो मिल रहा है बट जीरो सेट में नहीं है आइडेंटिटी मस्ट रिक्वायर इन द सेट मीन्स आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट अगर एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही है इसमें से चारों में से तो आप बोल सकते हो दिस इज नॉट अ ग्रुप मीन्स एन विथ एडिशन इज नॉट अ ग्रुप clear this part if not satisfied give the counter example clear this now natural number with second one consider natural number with subtraction consider first or consider any of them multiplication now natural number with multiplication set of natural number 1 2 3 4 up to so on sorry up to so on and star consider multiplication now here algebraic structure n with multiplication check this is a group or not first check closure property always first check closure property मीन्स आप कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो उसका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करो a इंटू बी दिस ऑलवेज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज नेचुरल नंबर दिस बिलोंग्स टू ऑलवेज सेट नाउ associativity एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करेगी कि आप कोई भी तीन नेचुरल नंबर ले लो फर्स्ट फाइंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी एंड देन मल्टीप्लाई विथ सी एंड फर्स्ट फाइंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी एंड सी एंड मल्टीप्लाई विथ ए दिस ऑलवेज ट्रू यस मीन्स ए स्टार बी with operate with star c and there's a b star c operate with star a always same or not if star is multiplication now identity क्या करिए कि आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो देयर एग्जिस्ट ई सच दैट ए विथ मल्टीप्लाई विथ आइडेंटिटी दिस ऑलवेज ए यहाँ पे ई क्या होना चाहिए कि आप बोलोगे कि सर वन ए इंटू वन इज इक्वल टू ए और ए वन e is equal to 1 this belongs to natural number yes this is true means identity exists and belongs to set identity property satisfy now inverse property here satisfy or not here not satisfy why because if you consider 5 belongs to natural number so that 5 इनटू आपको एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करने से आपको आइडेंटिटी मिले मीन्स 1 यहाँ पे ऐसा कोई ए प्राइम मिलेगा सो दैट 5 इंटू ए प्राइम इज इक्वल टू 1 आप बोलोगे कि 5 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 1 बट दिस 1/5 बिलोंग्स टू द सेट दिस 1/5 डजंट बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनवर्स एग्जिस्ट 1/5 बट 1/5 not in the set means inverse not exist if you write here inverse does not exist if not exist give the counter example this is a counter example if you consider 6 4 any of them inverse not exist for all the natural number one inverse exists belong to the set but this is a one particular example not true for all clear this part now and with subtraction consider this part natural number means this is not a group and with multiplication is not a group now and with subtraction natural number with subtraction check this is a group or not how to check first check closure property क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करिए कि आप कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो उसका सबसेक्शन नेचुरल नंबर मिले ऐसा ज़रूरी है आंसर इज नो गिव द काउंटर एग्जांपल 3 and 7 belongs to natural number yes what is 3 minus 7 this is minus 4 this belongs to natural number answer is no this is a particular example this is not satisfied this order pair 3 and 7 means closure property is not satisfied then direct say that this is not a group if one first property is not satisfied direct say that this is not a group not check other property clear now and with division is a group and with division
Now again check first closure property. Here closure property again not satisfy. This is the, suppose consider 3 again 7 belongs to natural number. Yes. What is 3 divide 7? This is equal to 3 by 7. This belongs to natural number. Answer is no. Means closure property not satisfy means n with division. This is not a group. Clear this part? Now z set of integer means 0 plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3 up to so on. This is a group or not? With respect to addition, and z with addition is an abelian group. This is the abelian group. You can verify also. This satisfies closure property, associative property, identity, all the element inverse exist, and there's a commutative also. You can verify. Now check this is z with multiplication is a group. Answer is no. Why? First check closure property. Closure property. Now means if you consider any two integer, means AB belongs to Z. A minus B always belongs to Z. Yes. If you consider any two integer, closure property always hold. Now associativity. Associativity means if you consider any three integer A, B, C belongs to Z, means A into B into C is equal to sorry here multiplication not subtraction, multiplication. A into B, this always belongs to Z. Now this is the first, find B into C and multiply with A, this always belongs to set. This always hold. Now inverse, identity. What is identity? If you consider any A belongs to Z, A is into 1, this is always A, means 1 belongs to this, E is equal to 1, this belongs to also Z, means identity exists. And inverse, if you consider 5 belongs to Z, yes or no? There exists elements so that 5 into this element is equal to identity exists. आप बोलोगे कि 1 by 5, but 1 by 5 belongs to the set Z. Answer is no. Means inverse not exist. Inverse here does not exist. Clear this part? Means this is not a group. Z with multiplication. Now Z with subtraction is a group or not? Z with subtraction, this is a group. First check closure property. If you consider any two integer Z, A minus B always belongs to Z. Yes. Now associative property. associative क्या करेगी कि आप कोई भी तीन एलिमेंट ले लो, फर्स्ट ऑपरेट ए एंड बी एंड देन ऑपरेट विथ सी एंड फर्स्ट ऑपरेट बी एंड सी एंड ऑपरेट विथ ए, result answer same. But here associative property not satisfied. If you consider 2, 3 and 4 belongs to Z, yes or no? Now there's a 2 minus 3 minus 4. This is equal to, there's a minus 1, minus 4 and this is equal to minus 5. And if you find 2 minus 3 minus 4, this is equal to 2 minus, there's a minus 1, this minus minus plus 1 means 2 plus 1, this is equal to 3. Both are equal? No. Associative property not satisfied, means this is not a group. Clear? Now similar way you can check Z with division is not a group. Why? Because here again first closure property is not satisfied. If you look at this, subtraction and division, subtraction, this one, subtraction and division, this one and this one is not satisfy associative property.
Clear? With set of natural number, if you consider set of integer, this is not satisfy subtraction and division not satisfy associative property. लिखना है तो यहाँ पे not लिख सकते हो. Subtraction, division are not associative. क्लियर? अगर यहाँ पे कहीं पे भी आपको सब्सट्रैक्शन और डिवीजन दिख जाए तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाई, मीन्स दिस इज नॉट अ ग्रुप. मीन्स ग्रुप के लिए आपको ये चार प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी ही होगी. फर्स्ट चेक क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. क्लियर दिस पार्ट? एंड फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव. इफ सेटिस्फाई दिस फाइव प्रॉपर्टी देन वी से दैट इज अ अबेलियन ग्रुप. If any doubt, ask in the next lecture in the comment box.